नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने ये एक जजमेंट लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये बहुत ही काम आने वाली है पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज के लिए जो कि ट्रांसफर अक्सर करवाते हैं। ये देखा गया है कि वो ट्रांसफर के लिए जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यूज करते हैं और वो इस इन्फ्लुएंस की वजह से जो है फिर उनकी जो ट्रांसफर चैलेंज हो जाती है ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने और ऑनरेबल कोर्ट जो है उनको क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा ही ये जो एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और जिसमें जो है ये लॉ ही ले डाउन कर दिया गया है कि इस तरह से जो है अब किसी भी ट्रांसफर को जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। तो क्या है इसके फैक्ट्स, तो देखिए मैं आपको ये आपके सामने लाइव जजमेंट। द petitioner has assailed his transfer wide office order dated 13 February 2013 from HPPW Dharampur Division to HPPW Sangraha Division against vacant post. The petitioner was regularized as motor mate on 15 November 2008 and was posted at Dharampur Division on 7 February 2010. It has been alleged that transfer of the petitioner has been done with political manipulation and not in the public interest. He was threatened by the local politician to transfer. The state has not applied a fair method while transferring the petitioner. The state has not considered the seniority of the petitioner. Some of the work inspectors have completed more than 15 years at Dharampur Division only. Policy of pick and choose has been adopted for transferring the petitioner. The mother of the petitioner is 76-year-old who is under regular treatment. The petitioner is facing genuine problem. Sangra is at a distance of 400 kilometers from Dharampur. The petitioner has been transferred under political pressure after his stay of 2 years and 10 months only at Dharampur. The transfer of petitioner is wrong, illegal and arbitrary. The respondent number 1 and 3 have contested the petition by filing the reply. It has been stated that the petitioner was appointed on 7th April 2010 as work inspector and since then he has been serving in sub-division at Madi Division, Dharampur. The petitioner has completed normal tenure in his place of posting. The transfer policy of the government is in nature of executive instruction. The transfer order dated 13 February 2013 has been issued after the approval of the competent authority who can transfer an employee at any time anywhere in the state. There is no violation of the administrative rules nor any mala fide is involved in the transfer of the petitioner. The submission has been made for dismissal of the petition. ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा जो है रिस्पॉन्स रहता है जो है डिपार्टमेंट का, और इसमें जो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के बारे में कहा गया है। वो क्या है, मेरा फोरमैन इसका ब्यौरा दिया गया है। The petitioner has filed supplementary affidavit dated 16 June 2013. It has been stated in the supplementary affidavit that the petitioner has been transferred on the reference of one Mr. Chandrasekhar, a politician having affiliation with particular political party who even contested the election of Legislative Assembly constituency Dharampur Mandi but lost. It has been stated that about 400 transfers have been made at the behest of said Mr. Chandrasekhar. In this context, DO's reference notes collectively annexure A1 has been placed on record with the supplementary affidavit. तो ये जो है एक इसमें जो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का था ट्रांसफर में, और फिर जो ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन पैरा 30 में आई है कि नो ट्रांसफर एट बिहेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सन होनी चाहिए। इसमें ये कहा है द ट्रांसफर एट द इंस्टांस ऑफ ए पर्सन हु हैज नो रोल टू प्ले इन द गवर्नमेंट will not only be extraneous consideration but also against public policy. It shakes the confidence of the people and creates an impression in the mind of common man that the center of power is somewhere else and not the government. In order to curb this tendency, the inspired confidence in general public and more particularly in the employee, it is necessary that no one should get an impression that employee can be transferred for asking at the instance of a person who has no concern with the government. This, if goes unchecked, is bound to affect the morale of the employees and their independent working and will not be in the interest of general public. There is, however, one caveat that any person has a right to make a complaint against an employee regarding his conduct to his superior or chief minister and even request for his transfer. It is, however, only for the competent authority to consider the request and take appropriate action in accordance with law. Further, it is unfathomable that such large number of transfers could be made at the instance of a person who is not in the government nor a people's representative as such.
Issuing transfer order at the instance of outsider who incidentally happens to be a party worker cannot be a coincidence but a concerted effort of the duty holders who were otherwise responsible to preserve rule of law. Such action not only shakes the conscience of the court but also inevitably impinges upon the validity of such orders as the same are the product of culpable exercise of power. So, in Amir Chand Supra, it has been held that no transfer should be ordered at the behest of the party workers or others who have no connection either with the legislative or the executive. In case they want to complain about the functioning of the employee, then the complaint must be made to the minister in charge and or the head of the department. Only after the complaint is verified should action be taken. It has been iterated that no transfer should be made at the behest of the party workers. It is not the case of the respondents in the petition in which petitioners have been transferred outside Dharampur that Mr. Chandrasekhar is holding any position in the government or he is a legislator. It has not been explained by respondents in 3 petitions how the requests for transfer of 3 petitioners outside Dharampur were considered by the Chief Minister before ordering their transfer. तो ये सारे इसके फैक्ट्स वगैरह इवेल्युएट करने के बाद जहाँ की ये पाया गया कि ये जो एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से ट्रांसफर हुई है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है अल्टीमेटली जो है पैरा 38 में इन सारी ट्रांसफर को जो है क्वेश्चन कर दिया था. इम्प्यून ट्रांसफर ऑर्डर इन ईच पिटीशन इज क्वेश्चन एंड सेट असाइड द ओरिजिनल रिकॉर्ड भी टर्न फोर्थ. तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है. तो इसीलिए जो है कोई भी जो है ट्रांसफर जो है किसी भी एक्सट्रेनियस पॉलिटिकल प्रेशर या डीओ लेटर वगैरह पे नहीं होनी चाहिए, जो कि यूजुअली हमने देखा है जो कोर्ट जो है उनको रिजेक्ट कर देती है, टर्न डाउन कर लेती है, क्वेश्चन कर लेती है. तो ये जो जजमेंट है ये बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, CWP नंबर 801 ऑफ 2013 जो मेन है, बाकी इसके साथ लगी थी 5 जुलाई 2013 की जजमेंट है. और संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ HP इसका टाइटल है. ये जो ऑनरेबल डिवीजन बेंच की थी, द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AM खानविलकर चीफ जस्टिस जो अब ऑनरेबल जस्टिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह की जजमेंट है डिवीजन बेंच की, और ये अभी तक गुड होल्ड करती है. तो आप सबसे जो है यही है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कोई भी ट्रांसफर जो डीओ लेटर के बेसिस में ना करें, क्योंकि इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बाद में ये चैलेंज हो जाती है. और हमने देखा कि इन द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है इस तरह की ट्रांसफर क्वेश्चन हो जाती है. तो धन्यवाद. आई होप कि ये जजमेंट आप लोगों के सबके काम आएगी और इससे आपको काफी लोगों को गाइडेंस मिलेगी. तो बिफोर आई पार्ट माई वेज, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि काइंडली आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने जो है व्यू पॉइंट्स फीडबैक मुझे देते रहें यूट्यूब पे ही, व्हाट्सएप पे ना दे काइंडली, और जो है सब्सक्राइब करें. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन सो फार. आई होप कि इन फ्यूचर भी आपका ये कोऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा. ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.